So guys, in this lecture we will deal about permutation with repetition. So what do you mean by the permutation with repetition? If out of an object in a set, okay, if out of n objects in a set, projects are exactly alike of one kind, है ना? P objects are exactly alike of one kind, okay, alike of one kind. Q objects are exactly alike of second kind, and R objects and R objects are exactly of third kinds. Okay. Then अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला हमने स्टडी किया है NPR, ओके, दैट इज हियर N are the distinct objects. All are the distinct objects, and then we select the R out of these n distinct objects. Then we permute, okay, and then we try to find out the number of permutations. That is n factorial upon n minus r factorial. But in the case if there are n number of objects, and in n number of objects, and out of which uh, P are alike and Q are alike, okay, and R are alike. So how we will find out the permutation, total number of permutation? Then it will be very simple. That is n factorial and divided by P factorial, Q factorial, and R factorial. We will find out by this method the number of total permutation, okay? So in the support of this formula, we will study some example here. For example, how many ways are there to arrange the 9 letters in the word Allahabad? Okay, very simple question. और कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपको बड़े मिलेंगे मोस्ट ऑफ द competition examinations में. Okay, how many ways are there to arrange the 9 letters in the word Allahabad? Okay, in the word Allahabad. Okay, so if we see that how many letters are there, that is the total number of letters are 9. Okay, 9, and A, that is number of A's equals to 3, and number of L equals to 2,
and number of Allahabad, ओके, एच भी एक होगा और बी भी एक होगा और डी भी एक होगा। कितना हो गया, 3 2 5 और 3 8, एक गड़बड़ हो गया अभी। एल दो हो गए, ओके, 1 2 3 4, ए 4 हो गया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड, ओके। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ परमुटेशन, कितने तरीके से कर सकते हैं आपसे, दैट इज 9 फैक्टोरियल, है ना, टोटल 9 है, और 4 फैक्टोरियल, then 2 factorial, then 1, then 1 factorial, and it's equals to 9 factorial, that is 9 into 8 into 7 into 6, okay, into multiply by 5 factorial, and divided by 5 factorial, multiply by 4 factorial, multiply by 2 factorial. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन, जो आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 7 6 5 and 4 factorial, okay, and then divided by 4 factorial into 2 factorial, then 4 factorial से गया, 2 factorial की वैल्यू क्या होती है, 2 into 1 2, तो 2 से इसको काट दीजिए आप, 3 टाइम्स कट जाएगा, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल फाइंड आउट द आंसर 7560। तो इतने तरीके से हम इसको परम्यूट कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, ओके। नाउ we will study the another example, okay. Find the number of different messages that can be represented by a sequence of 4 dashes and 3 dots, okay। चलो मैं सवाल लिख देता हूँ, find the number of different messages sent by 4 dashes and 3 dots ओके। तो कितने मैसेज आप बना सकते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 7, है ना, और उसमें 4 एक तरीके के और 3 एक तरीके के, ठीक है। तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, then divided by 3, 4 factorial, 3 into 2, that is 3 factorial, okay. So 7 into 6 into 5 और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 35, ओके। तो इतने तरीके से आप कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आर देयर, ओके। तो गाइज आपको ये देखना है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं रिपीटेड है या फिर डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो एनपीआर वाला फॉर्मूला, अगर रिपीटेड है तो आप ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक सवाल और यहाँ पे करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पॉइंट 12 ऑफिसेस, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways to point 12 offices to point 12 offices so that 3 of them are green, 3 of them are green, 2 of them pink,
Point or pent? It should be, I think, pent. Okay. Find the number of ways to pent 12 offices. To pent, it should be pent. Okay, not point. Okay. Three of them are green. Two of them are pink. Are pink, and two of them yellow. Okay, two of them yellow, and remaining is one, that is a white. Okay, and one is white. So in how many ways we can perform this job? So how many total number of faces are there? That is 12, and three of alike, two of alike, two alike, one is alike. That is equals to 12, 11, okay, 10, 9, 8, 7, then 6, then 5, then 4, then 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial. So what about the 3 factorial? It is cancel out. 2 factorial into 2 factorial is nothing but the 4. So it is cancelled out by this. Now what about this? Now we multiply all these numbers, then we will get final answer 1,66,320. Okay, it's our final answer. तो दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो एंडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए और एक रिपीटेड के लिए. तो पहचानना हमें कि कौन सा डिस्टिंक्ट है और किसमें रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पे नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूजडे, हम अगर बात करें TUESDAY, okay, DAY. If you see that T is 1, U is 1, E is 1, S is 1, all the alphabets are distinct, all alphabets are there. Okay, distinct alphabets are there. One more thing. The letter of the word are arranged in a line. Each arrangement ending with letter S. How many different arrangements are possible there? Okay. तो उसने क्या कहा कि आपका जो एंड है, it should be अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर एस. एक इस तरीके से आप अरेंज करिए ताकि आपका लेटर एस जो है, आपका जो बने आपका अरेंजमेंट वो एस से एंड हो. पहली बार, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर, 1 2 3 4 5 6 and 7. Total number of 7 alphabets are there. Okay, so 1 2 3 4 5 6 and 7. तो एस एक आपने फिक्स कर दिया, तो फिक्स कर दिया, इसका तो नंबर ऑफ वेज 1 है. हाउ मेनी रेस्ट आर देयर? 6. ओके, तो ये 6 जो अल्फाबेट्स हैं, इन 6 प्लेसेस पे आप 6 तरीके से इनको वो कर सकते हैं, प्लेस अरेंज कर सकते हैं. ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से, क्योंकि 6 प्लेसेस आर देयर एंड 6 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट आर देयर. तो 6 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं. और ये सातवां एक ही तरीके से अरेंज होगा. दैट इज हाउ मेनी टोटल आर देयर? दैट इज 6 फैक्टोरियल. ओके, एंड इन कंटिन्यूशन, हाउ मेनी ऑफ दीज स्टार्ट विद लेटर डी? ऐसे कितने जो डी से स्टार्ट होंगे, है ना? ठीक है, अगर उसने डी से स्टार्ट होंगे और एस पे एंड होंगे, इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है वो आपसे, है ना? लेकिन उसने यहाँ पे सवाल किया कितने ऐसे होंगे जो डी से स्टार्ट होंगे और एस पे खत्म होंगे. अब यहाँ पे एक काम करें, आप डी को ही फिक्स करते हैं. ठीक है, तो ये भी फिक्स हो गया. अब कितने बचे आपके पास? ये पोजीशन अल्फाबेट कितने बचे? 5 अल्फाबेट बचे. उन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं. दैट इज 120. ओके, और 6 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा आपका 720. तो जो सिर्फ एस पे एंड होंगे वो 720 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और जो
डी से शुरू होके एस पे एंड होंगे, वो 120 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी signals can be made. Okay, I read the question here. How many signals can be made by using six flag, by using six flags of different colors. When any number of them may be, when any number of them may be posted at a time. ठीक है. The number of signals, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द सिक्स फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम मे बी होस्टेड एट ए टाइम. यानी कि एक को लेकर भी आप सिग्नल बना सकते हैं, दो को लेकर भी आप सिग्नल बना सकते हैं, तीन को लेकर भी आप सिग्नल बना सकते हैं, चार को लेकर भी आप सिग्नल, चारों को लेकर भी आप सिग्नल बना सकते हैं. ठीक है, तो ये है. अब साहब सिक्स फ्लैग्स हैं आपके, सिक्स डिफरेंट कलर्स के. ओके, तो एक एक को लेके आप कितने तरीके से सिग्नल तैयार कर सकते हैं एक फ्लैग को लेके, है ना. द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड यूजिंग वन फ्लैग ओनली, दैट इज 6p1. इतने तरीके से बना सकते हैं आप. नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग वन फ्लैग, है ना. नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग टू प्ले फ्लैग, 6p2 तरीके से आप बना सकते हैं. 6p2 तरीके से मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 30, है ना. या फिर आप उसने कहा कि आप तीन भी लेकर बना सकते हैं, दैट इज 6p3. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 120. या फिर आप चार लेकर भी बना सकते हैं, 6p4 दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 360. उसने कहा है कि आप पांचों को लेकर भी बना सकते हैं, पांच को लेकर भी बना सकते हैं. तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके, 720. इसका मतलब आपकी छह के छह को लेकर भी आप सिग्नल बना सकते हैं. तो कितने तरीके से बनेगा. ओके, तो ये हो गया आपके पास आई थिंक, ठीक है. और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा आपके पास, लगभग 720 ना. 6p6 होता है आपका 720, 6p5 कितना होता है, 6p5 भी 720, 6p6 भी 720. वेरी गुड. तो ये भी 720 हो जाएगा. ओके, तो ये इतने तरीके निकल आए आपके, है ना. तो नंबर ऑफ सिग्नल्स that can be formed by using six flag. Therefore, the total number of signals that can be made, total number of signals, therefore, the total number of signals the total number of signals that can be made equals to 6 plus 30 plus 120 plus 360 plus 720 and plus 720, that is equals to
1956. ओके, इतने सिग्नल्स आप बना सकते हैं. Now for the next question, we are going to do here. Okay. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits. Okay. Another question is find the number of 4-digit numbers. 4-digit numbers that can be formed that can be formed using the digits 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 5. Okay, if no digit is used, if no digit is used more than once, more than once in a number, okay, more than once in a number, how many of these numbers will be even? It is the next question. Okay, it is the next question. How many of these numbers will be even? तो इनको लेके आप कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स आप बना सकते हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है सर, है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. 4 डिजिट का नंबर बनाना है भाई, 5 डिजिट्स में सिलेक्ट करने हैं और डिस्टिंक्ट नंबर बनाने हैं, डिजिट्स का रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है. दैट इज 5 की 4 तरीके से बना लेंगे आप, सिंपल. दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 वेज. ओके, 120 वेज. अब उसने सेकंड में क्या कहा कि हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स विल बी इवन. तो एक काम करते हैं, 4 डिजिट्स का नंबर बनाते हैं हम, है ना, और चार प्लेसेस हमें फिल करने हैं, लेकिन एक प्लेसेस हमारा फिक्स है कि यहाँ पे इवन नंबर आएगा और हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड 5. तो हाउ मेनी इवन नंबर बनाने के लिए आपके जो डिजिट रेस्ट्रिक्टेड हो गया, लास्ट वाला डिजिट आपका क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड, या तो 2 होगा या 4 होगा. तो इसकी प्लेस पे कितने ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन है. और बाकी 3 के लिए कितने हैं, बाकी 3 के लिए एक जो यहाँ पर आ जाएगा बचा 4, 4 में से 3 आपको फिल करना है. 4 P3. ओके, 4 P3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. एक जो आपका यहाँ पर आ गया वो अब यहाँ 4 में काउंट नहीं होगा, है ना, अब उनसे अलग लेना है आपको. तो 4 बचे आपके पास, 5 में काउंट नहीं होगा उसको. तो 4 में से आपको 3 सिलेक्ट करना है, 4P3, दैट इज इक्वल्स टू 4P3 इंटू 4P3 इंटू 2. ओके, इट्स हाउ मच, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2. तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया आपके पास, 4 के 12 24, ओके, 24 इंटू 2 48. ओके, 48 वेज से आप इसको कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे इन द सेम डायरेक्शन कि हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड, है ना. मैं सवाल लिख देता हूं यहाँ पे, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning, repetition, with or without
repetition can be formed with or without repetition can be formed can be formed out of these out of the letters out of the letters of the word of the word logarithmics. Okay, now so let me check it. Okay, there is a problem. Okay, out of the word, I think what was the word? Logarithmic. Okay, logarithmics. Logarithms. Okay, if repetition of the letter is not allowed, with or without meaning. Okay, solution. So if we talk about the repetition is allowed, so how many digits are there? One. How many alphabet are there? One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10. Okay. So it will be simply 10 P10. So that is equal to 10 factorial. If we talk about the without repetitions. Okay. So the number of रिक्वायर्ड वर्ड्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट अच्छा 4 को लेकर बनाने तो आप 10p4 की बात करेंगे ओके 10p4 ओके दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल ओके अगर आप बात करें यहां पर डिस्टिंक्ट की है ना ये तो हो गया आपके पास के रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के केस में अगर रिपीटेशन अलाउड कर दें तो इसको भी आप 10 वेज से फिल कर सकते हैं इसको भी आप 10 वेज से फिल कर सकते हैं इसको भी आप 10 वेज से फिल कर सकते हैं इसको भी दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 ओके सो इतने बन सकते हैं नाउ इन द कंटिन्यूशन here how many four digits number can be formed it's a very good question we can try to okay like how many how many four digit numbers four digit numbers between 1000 and 10,000 okay can be uh, are there okay are there with distinct with distinct two of these with distinct two of these so how many are odd number how many are odd number the main thing is that first of all we should understand the question how many are odd numbers ओके सो सॉल्यूशन तो भाई सवाल ये है कि हमारे पास में 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं
और 4 डिजिट्स के नंबर जो है यानी कि 4 प्लेस हमें फिल करना है 1 2 3 4 और 1000 से लेकर के 10,000 के बीच के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द 10 डिजिट्स टेकिंग 4 एट ए टाइम। हमें क्या करना, हमारे पास डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 डिजिट्स आते हैं। तो 4 एट ए टाइम आपको लेनी है ना, तो 10p4 तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 10p4, ओके 10p4। But these arrangements also include which has 0 at 1000 place। जब 0 at the 1000 place पे आ जाएगा तो फिर ये आपका 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि 0 शुड नॉट बी हियर। दैट इज आपको इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होने चाहिए 9, और बाकी 3 प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होने चाहिए 10p3, ओके 10p3। बाकी 10p3 होना चाहिए आपके पास, तो ये हो जाएगा टोटल 9 × 10p3 है ना। देन इसमें आगे एक सवाल उन्होंने कर दिया कि कितने ओड नंबर बनेंगे, यानी कि वो लास्ट वाला डिजिट भी रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है ना। तो लास्ट वाले डिजिट को क्या कहना चाह रहे हैं ओड नंबर में, कि ओड नंबर में क्या क्या आ सकता है आपका 1 आ सकता है 3 आ सकता है 5 आ सकता है ऐसे। तो इसको गिरा के आप 4 तरीके से इसको फिल कर दें, अच्छा, और इसको 9 तरीके से फिल करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आपका वो रहना चाहिए नॉन जीरो नंबर, तो 9 हो सकते हैं 9 तरीके से। ये यहाँ पे ओड होने के लिए आपके लास्ट में ये होने चाहिए, चार नंबर में से कोई एक नंबर होना चाहिए, दे आर 4 वेज। तो अब बचे 2 प्लेसेस, तो उसको आप कितने तरीके से भर सकते हैं 10p2 तरीके से आप इसको भर सकते हैं, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर्स निकल के आए आपके पास, दैट इज 36 10p2 आर द 36 10p2 आर द ओड नंबर्स, टोटल ओड नंबर्स आर देयर, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल नंबर्स आर देयर, इसमें इवन भी है और ओड भी है, ओके। सो देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। तो इसी तरीके से इसी डायरेक्शन हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और यहाँ पे लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, इसको नहीं करते, ये तो पहले क्वेश्चन हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ए ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, इट इज आल्सो पैरेलल क्वेश्चन हियर, है ना। हाउ मेनी परमुटेशन, ये भी पैरेलल है। चलिए ये सारे एक ही जैसे सवाल हमारे पास बनते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें से एक सवाल यहाँ पे लेकर चलते हैं, हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स। ये लेटर वाले सवाल इम्तिहान में भी काफ़ी आते हैं, काफ़ी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको फेस करना पड़ेगा। ट्राइंगल, ओके, कितने डिफरेंट, हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कितने आप बना सकते हैं, कितने परमुटेशन आप इसमें बना सकते हैं। तो जैसे बात है कितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको आप बना सकते हैं 8p8 बेस से, ओके 8p8 दैट इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल, है ना। तो इतने तरीके से आप इसको परमूट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको और रेस्ट्रिक्ट करूं कि कितने अल्फाबेट्स आप ऐसे बना सकते हैं, सॉरी कितने वर्ड्स आप ऐसे बना सकते हैं जो स्टार्ट हो टी से और एंड हो ई से, है ना, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम टी एंड एंड इज एंड विद ई। तो दो प्लेस तो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिए यहाँ पर, है ना, दो तो आपने क्या कर दिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, तो बाकी 6 बचे। तो 8 में से 6 कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 8p6 तरीके से, है ना। तो दैट इज 20, 8p6 का मतलब हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, है ना, दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल टू 20,160 नंबर ऑफ वेज से आप इसको बना सकते हैं।
Okay, the next question is, in how many ways, in how many ways 10 books can be arranged 10 books can be arranged on a shelf so that a particular pair of the books shall be always together, never be together. Can be arranged on a shelf on a shelf so that a particular pair a particular pair of books shall be number 1 always together, second never together, ठीक है। अब बात आप करें, आपके पास 10 बुक्स हैं, कोई दो बुक 10 बुक हैं, उनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं शेफ के, तो 5 6 7 8 9 10, तो कोई 10 बुक्स है ना, तो 10 बुक्स में से कोई दो एक साथ रहे, पहले वाला आप करते हैं, कोई दो एक साथ रहे, इसका मतलब ये आपके पास एक यूनिट मान लीजिए, इन दो बुक्स को आप एक यूनिट मान लीजिए, ये दो एक साथ ही रहेंगे, आप इनको यहाँ पर रखिए या फिर यहाँ पर रखिए या फिर यहाँ पर रखिए, है ना। तो इसका मतलब आपके पास टोटल प्लेस है 10, है ना। तो कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं ना। तो आपके पास 9 बुक्स हैं एक तरीके से, तो 9 तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो दो बुक्स हैं वो जो एक साथ रखी जाएंगी वो भी आप उसमें अरेंज हो सकती हैं दो तरीके से, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या ऑलवेज भी टुगेदर एक साथ रखी जाए, तो इतने नंबर ऑफ फेज से आप उनको एक साथ रख सकते हैं। सेकंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से रखी जा सकती है, 10 तरीके से रखी जा सकती है ना। 10 तरीके से रखी, दैट इज इक्वल टू, तो ये आपके के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इतने बन सकते हैं उनके, और कोई दो बुक एक साथ रखी जाए वो इतने तरीके से रखी जा सकती है। अब अगर वो दोनों एक साथ ना आए कभी भी, उससे कितने तरीके बनेंगे, तो भैया जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं आपके अरेंज करने के, कि कितने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हैं, वो है ये, और इसमें से इसको माइनस कर दें, ये वो तरीके हो जाएंगे कि आप कभी की दो किताब कभी भी एक साथ नहीं रखी जा सकती है। सेकंड पार्ट का इसका जवाब हो जाएगा, है ना। तो नाइस वन क्वेश्चन। ओके, तो गाइज आई थिंक इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स, है ना, और सवाल हम परमुटेशन के ऊपर देखेंगे, देन वी विल मूव टू द कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।